Good afternoon, friends. We have Mr. Gopinath and his team there from Mazagon Docks, Bombay. It's the naval shipyard, if I'm correct. And this is देशवासियों के लिए एक बड़ा गर्व का वो वहाँ पे होता है feeling कि you're working in Mazagon Docks, Bombay. That is the port area. We have so many ports in Western India. Yes. And अभी ये लोग हम लोग जो इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनका एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लोग ने हाईलाइट करा जो हमने आपको शुरू में दिखाया फ्रेम में। MSME जो मध्यम लघु उद्योग हैं और जो माइक्रो लघु उद्योग हैं, उनका 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में मेरिडियन में चल रहा है। 17, 18, 19 आज आखिरी दिन है। ये MSME डेवलपमेंट फोरम के तहत हो रहा है, जिसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है फॉर आत्मनिर्भर भारत। एंड कल भी मेरा इनसे बातचीत हो रहा था इनफॉर्मली, तो हो रहा था कि अभी जो पहले काफ़ी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब विमेन को आगे आना है और रजिस्टर करना है कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उनके रूल्स रेगुलेशंस में ऐसे था कि आपको सिक्योरिटी मनी देना है, टेंडर्स एंड ऑल. नाउ द प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड. सो ओवर टू मिस्टर गोपीनाथ सर अबाउट योर सर. We are basically from Mazagon Docks Shipbuilders Limited. It is a company, a defense company based in Mumbai, and we are the ships and submarine builders to the nation, basically Navy. Yes. And now we have ventured into private merchant ships manufacturing also, Okay. construction Right, also. And on behalf of our chairman and managing director, Sri Vice Admiral Narayan Prasad, we thank Mr. Rajneesh Goenka, sir. the chairman MSME Development Forum, for inviting us to participate in this 7th India International MSME Expo and Summit 2021. Yes, sir. Okay. So for constructing the ships and submarines, we require a lot of engineering items, electrical items, electronic items. So we are here just like washers, nut bolts, steel plates, welding electrodes, और अपना electrical and electronic items रहेंगे. Lighting, yes, then fixtures, furnitures. And various services are also involved in constructing the ships and submarines. So these and all we are expecting these MSME firms to participate in our tenders and all. Sir. And we have set up a stall here. Yes. To guide them, to help them in participating in the tenders. Because Delhi, you're in the capital of India. Yeah. I'm not saying it's the heart of India because Madhya Pradesh is supposed to be. And आप लोग क्योंकि you come from the western part. Yeah. So then we have in Visakhapatnam, Navasheva Port Trust is there. तो आप लोग का I think the naval it's frigate. अभी तो क्या है peace time चल रहा है. So in peace time you're doing your productive work. Yes. But once the war starts, अभी जैसे चल रहा था पीछे बादल हो रहा था. Let us hope the war doesn't start. Yeah, so war I'm not, because now people are more sensible. Yeah. Except जो हम लोग का कोरोना का एक काल में हम लोग फंस गए हैं सब लोग. We never thought कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ पैंडेमिक होगा. True. So That is why we are building our defenses. yes, so World War II, World War I के बाद I don't think so there'll be a World War III. It shouldn't be. It shouldn't be. Yeah, it shouldn't be. Yes. So main thing is to keep the people at work. Yes. So sir, it was good meeting you. Yeah. And we met your team yesterday. You told us कि इसमें लोग जुड़े and आप लोग जो support कर रहे हैं वो from the ministry level everything is there. Tender processing में है. Yes. उसका simple आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे कि जैसे जो यंग चैप है आज इंजीनियरिंग कर ले रहा है कॉलेज से, उसके बाद उसका भविष्य उसको नहीं दिख रहा है बिकॉज उसके फादर शायद खेत में काम कर रहे हैं. उसने उनको अभी जैसे सुबह में डॉक्टर एला जो भारत बायोटेक के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं को वैक्सीन का उनका इंटरव्यू सुन रहा था दूरदर्शन पे, तो उस समय वो बोल रहे थे उनका पहले भी हम लोग पढ़े कि his father was a farmer and he was not allowing him, but he said no, I am not going to go into farming and I am going to go into research. तो इसमें कैसे जुड़ सकते हैं हम, आप एक संक्षिप्त में सर 1 minute you can tell us small. कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्राइवेट जॉब भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है. Right sir. हाँ, सो
तो अपना एक खुद का एक छोटा सा सेटअप करके Right, sir. इंजीनियरिंग आइटम्स का हो या मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह या सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। राइट सर। सर्विसेज वगैरह का नॉलेज लेके एक फर्म सेटअप कर दो तो हमारे जैसे कंपनीज बहुत सारे हैं सपोर्ट Right, sir. करने के लिए। So we'll just close it at now. And आपका background sir engineering background? Yes, I am a mechanical engineer. You're sir from which university sir? So, I am from Karnataka, Gulbarga University. Gulbarga, Grazen. And we have Mr. Deep. Yes. He's also an engineer. So please introduce yourself sir. Myself, Manivenkat Deep Tunuguntla. I have completed my naval architecture from Andhra University. Yes. And naval architecture does, basically design and construction of ships. Yes. And I've got selected in MDL through campus placements, and currently I'm working with commercial department. Okay. So I'm into tendering stage and all. Yes. And helping the vendors to understand, what all reservations have been given by Government of India for MSME firms. Right. And to facilitate and to make sure that MSME firms understand and participate in the tendering process. Right. Yesterday when I met him, so I found him that he's very accessible. Because normally होता ना डिफेंस में एक तो पहले वो कोई उनको अप्रोच नहीं कर पा रहा तो इनका था कि वी आर देयर टू हेल्प सर यू आल्सो जॉइन इन और आप भी अपना इंट्रोडक्शन सर Hello, myself is Pramod Kumar Roy. निकाल सर टुवर्ड्स द स्पीकर सर Myself is Pramod Kumar Roy. I have completed my engineering from Bhopal, Rajiv Gandhi Technical University, and joined MDL in 2009. ओके वेरी लॉन्ग इनिंग्स Yes. We both joined in the same year. ओह लवली Previously, I worked in submarine division. Right. 10 years. Then recently, I transferred in commercial department. Okay, so you're having a nice time now. You're meeting us. Definitely. Because once you're in the shipyard, then you cannot interact. No? correct. It's a restricted process. I've also been in defense manufacturing, utility items. Sir. Okay. We were manufacturing stretchers, lightweight for helicopters. Okay. And bed stairs for officers, जो मच्छरदानी के साथ रहता है. फिर हम लोग dental equipment भी FMSD को दे रहे थे. So I know what it means to be part of the Indian, defense forces. I've studied at the Air Force School. So Oh, very nice. Yeah. Very nice to know. I was in Delhi Kent, Subrodho Park. Okay. Although my father had joined Air Force after his college, he did metallurgical engineering from BHU 56. So he joined Indian Air Force, then he started teaching at Delhi College of Engineering. फिर we had a small scale industry. तो मेरा कल इन लोगों से आप लोग की टीम से मिलके और जो अंदर सेशन रजनीश गोइंज का जी ने ऑर्गेनाइज किया तो उससे थोड़ा मेरे को लग रहा था कि मीडिया को साइड में भी रख सकते हैं थोड़े दिन और गेट इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट प्रोग्राम. Yes. हम लोग पहले DGSND एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था Yes. जिसमें एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट सुई सब खरीदते वो लोग. Yes. तो उनके थ्रू हम लोग का टेंडरिंग प्रोसेस फर्नीचर हम लोग का रेट कॉन्ट्रैक्ट था. Now the tendering process has become very smooth. simple. Very smooth and simple. Yes. And it's very easy to understand also for a layman. Yeah, so that is what I wanted to bring to the youth of the country. Definitely. The boys, girls who are watching. So हमारा जो motivation of making a video on the YouTube is कि this data is available to For everybody. more details, people can log into our website www.magicon.in. Very simple. and yeah. know about the products and services Yes, we require. It's very simplified. Yes. Thank you, Gopinath ji, and your team. Welcome. Thank you, sir. Our pleasure.